तो सेबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी है। सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच संबोधित कर रही हैं। आइए सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Below the market price. No, that's... There have also been some cases. Can you look at... Sorry, time out, Mr. Haryana is reminding me, should we finish the presentation? Only 2 more slides and then we'll come back to Q&A. Sorry. Okay, no worries. So the next set of Abhimanyus in the market are perpetual insiders. And this has been an area of concern for them for the longest time. We have a mechanism called the trading plan. Again, the data shows that this has not worked well. It clearly doesn't work for people. And therefore, the need was felt to review it. Over to Mr. Anand. Can you say Yeah, as the chairperson mentioned, under the insider trading, prevention of insider trading policy regulation, we have the concept of a trading plan where an insider can adopt a trading plan and therefore not be subject to the requirements of insider trading, etc. Now, the feedback that we've been receiving is that this trading plan is fairly onerous. The way it works is that if you get into a trading plan, you have to declare that from 6 months in advance. Thereafter, you're locked in for about 12 months, where you necessarily have to act on that particular trading plan, even if the share price was to move very dramatically during that particular piece of time. So, if theoretically the share price was to fall dramatically for reasons outside of your control, because you've declared it as part of your trading plan, you would still be forced to sell the stock because you committed this several months ago. Now, even as we changed the LODR regulations on what constitutes a material piece of news, and we had a consultation paper out on saying that we don't have enough items being tracked as UPSI or unpublished price sensitive information, we realized that as we go down that path, we will only be requiring more UPSIs to be declared, which means the need for firming up a good trading plan process it becomes all the more important. So which is why we've set up a committee of market experts, of companies, of legal experts, etc., which will look into making the implementation of this trading plan a lot more user-friendly. We are hoping that this committee will come out with recommendations pretty soon, and by end of August we should have a consultation paper out, which will hopefully go a long way in easing the implementation of this trading plan. Thereafter, the other regulatory changes, if necessary, can take place. One more one which we've seen, and this is where I say that we've started looking at things from a first principles point of view. So there is a requirement of board evaluation, as you know, by listed entities. This is done, and then there's actually no filing of that data, and there is no disclosure of that data. And therefore, what we felt was that given this situation, what this really is in the nature of a best practice for boards to follow. In any case, it is not being disclosed. In any case, it is not being submitted. And therefore, something of this nature then rightfully belongs in the voluntary space and not in the mandatory space. So we are again reviewing. So just to, as I said, these 3 examples have been picked up just to give a flavor of the way that we are thinking about things in SEBI, that if something is not required, why is it there in the law itself? And if something can be made voluntary, why not make it voluntary? If standards can be set by the industry, why does SEBI need to stipulate? And so on. So that is our underlying thinking and underpinning. So again, this is something that of course will go through the normal process, but again, board evaluation, is it really required to be mandated or can it be voluntary, is another example. So I will stop here with just saying that, as I started out by saying, that India is in this wonderful place and we're all so fortunate to be here at this point in time. And we certainly consider ourselves extremely fortunate to be able to play a role in this whole India growth story, the economy and the capital formation. And so we intend to go down that path hand in hand with industry. That's it. Thank you, ma'am. We will open for the questions. Request that all of you will get opportunity to ask questions, so you will probably one by one. Yes, yes. Let me go to Leta first. I hope we'll be allowed not to stick to the syllabus.
we were expecting the circular on the announcements made in the previous board meeting about FPIs holding more than 50% in one share. The rules have not come out. When are we expecting it? Why the delay? Is there any opposition to it? No, there is no opposition. I think, I don't know whether we are raising the bar constantly on ourselves. Lata, the board meeting was held in end of June. 28. We are now sort of 3/4 of the way through July. And normally it's a 3-month cycle for all notifications and everything. So, so no, there is no opposition. It has been approved. It will be notified. It takes a certain process for it to be notified. Language translation, notification through the Gazette, etc., etc. It's a normal process. Okay, yes, please. Ma'am, I have one question on a few things that you've spoken about. You spoke about IPO also in terms of the time period and the value of money. The abeyance period is something which a lot of entities have pointed out. Sorry, what The period? abeyance period, if SEBI puts the IPO in abeyance period. Yes, can you speak on the mic? Hmm. Yeah, so the abeyance period is something which they pointed out that no matter what's the degree of problem with the promoter entity, the IPO is put into abeyance for an entity which needs capital. Are you looking at segregating the abeyance period depending on the nature of the problem Yes. with the parent entity? I think you're right, and they are right. And therefore, now what has happened is that we have started, so we've created sort of an internal SOP, which we will crystallize more clearly on the return of applications. So where there is, and that's why I said that, you know, any further improvement or reduction in timelines will depend on a collaborative work with the issuers and their merchant bankers. So things which typically, you know, were reasons for abeyance, as I said, is another regulator has not given approvals. So we will now have a simple policy where we will make sure that in terms of filing fees and all of that, there is no impact on the person. Right? So it's not as though when we return an application now, oh, when you come back, once you get the other regulator's approval, you will come back and then, you know, again there will be filing fees and all. We will not have any of that. We are crystallizing the policy to say that when there are certain matters where it's dependent on you, okay, and you need to get something from somebody, clearance from somebody or whatever, then we will return the application. It's not a question of abeyance. And whenever you come back and we will not charge you any additional fees. Two very short questions, and I apologize for bringing this to your door. But as you spoke about, clarification on rumor, just wanted to ask, would this apply on the regulator as well, in the sense that if there is something expected from the regulator which is moving the price, if something is written to you for a response, would the regulator also respond on that? And second one is out of what we've discussed, the TER regulations. They were expected, by when do you see the revised consultation paper coming? And if you could give us some clarity in terms of, as you said, significant relief, some definition, some color of that significant relief. Okay, so the second one is really easy. We've had one round of discussion with the advisory committee, the mutual fund advisory committee. The team is now again processing the inputs that we have got. Some more recomputation, calculation, etc. is being done basis the requests and the submissions in the advisory committee. So it won't be long, but I think we'll need to wait to see. As I said last time that we are now in that co-creation stage. It would be too premature for me to say anything more detailed than that. In terms of rumor verification, in terms of SEBI, I think it's a very important point that you've raised. And in fact, you might recollect in the context of the mutual fund TERs itself, quite as a departure from our normal practice, we actually issued a press release when we started deliberating the matter because we knew that it can move the price of various listed AMCs. And similarly, you know that the process we followed was a much more closed process compared to our normal, very open and consultative process when we designed the first thing, because again, it could have moved the market. So I think that
it is very important that, if there is something that is in the policy realm, okay, so let me break it up. Policy realm and enforcement. Enforcement is enforcement. It is, all investigations are strictly confidential, whether you have a rumor or don't have a rumor. It is impossible and inappropriate, completely inappropriate for a regulator to comment on it, because you are then essentially allowing a trial by media instead of a trial in the quasi-judicial process. So that would be completely irresponsible for the regulator to comment upon. However, when it comes to policy matters and the impact that it could have on people, I think it's important for SEBI going forward, we've already done it the first time, that we should be more conscious that if this is going to impact somebody, let's say it up front. And then indeed, as you said, if we fail to do that and if it results in a rumor, I think indeed we would be duty bound to respond to it in a responsible way. Thank you. Vinaka? Actually, I had some slightly more. तो यहाँ पर सेबी का प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और यहाँ पर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी पुच जो सवाल हैं पत्रकारों के, उनका जवाब दे रही है। हाल ही में उन्होंने एक सवाल जो आया उसमें कहा कि हाँ, सेबी की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी उन्होंने जिक्र किया, जो प्राइस मूवमेंट के लिए अफवाहों की बात, जो ये सवाल हमारे सहयोगी टीवी CNBC TV 18 के यश ने ही ये सवाल पूछा था और उसका जवाब दिया। इसके अलावा GST एडवांस टैक्स के साथ तमाम ये चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं और किस तरीके से जो असबा आया था उसने कितना इन्वेस्टर्स को जो इंटरेस्ट के पार्ट पर है एक नोशनल सेविंग दी है। तो बहुत सारे सवाल जिनके जवाब वो देती हुई, और इसमें से जो भी कुछ अहम निकल कर आएगा हम लगातार आपको उसका अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। चलिए अब कुछ दूसरी खबरों का रुख कर लेते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दल मणिपुर के मुद्दे पर संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे, जबकि विपक्षी सांसदों ने पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्यसभा के अंदर विपक्षी दलों ने मणिपुर के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड भी कर दिया है। संजय सिंह को सस्पेंड करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रखा था। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। लेकिन सरकार मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मैं अपना धरना जारी रखूंगा, अपना आंदोलन जारी रखूंगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा है कि वो इस आंदोलन में साथ रहेंगे। इधर मणिपुर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो संसद के अंदर और संसद के बाहर क्यों है इतना हंगामा और क्या है पूरी पॉलिटिक्स? आज का आवाज अड्डा इसी पर है। संसद ठप, पॉलिटिक्स जारी। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें आपको बताते हैं। टेस्ला और ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदल दिया है। अब से जो चिड़िया ट्विटर को रिप्रेजेंट करती थी उसकी जगह अब
एक्स ने ले ली है। अब ब्राउजर पर x.com सर्च करने पर भी वो ट्विटर की वेबसाइट पर ही रीडायरेक्ट हो रहा है। तो चलिए थोड़ा और डिटेल लेते हैं। हमारे साथ है हमारी सहयोगी शिबानी गरत। तो शिबानी, अब इलॉन मस्क साहब ने एक और ये परिवर्तन कर दिया, चिड़िया हटा दी है और एक्स ले आए हैं। अभी बिलियनर इलॉन मस्क ने ट्विटर पर जाकर यह अनाउंस किया कि वो ट्विटर की रीब्रांडिंग कर रहे हैं फ्रॉम इट्स आइकॉनिक बर्ड लोगो टू एक्स। अभी ये जो नई आइडेंटिटी है वो कई सारे चेंजेस के साथ इनफैक्ट आ रही है। एक फोटो इनफैक्ट ट्विटर की सीईओ लिंडा याकारिनो ने पोस्ट किया ट्विटर के हेडक्वार्टर्स पर ये नए लोगों के साथ, और उन्होंने अपने ट्वीट में क्लियरली कहा है कि एक्स इज अ प्लेटफॉर्म दैट विल बी सेंटर्ड इन ऑडियो, video, messaging, payments, banking, creating a global marketplace for ideas, goods, services and opportunities. उन्होंने ये भी कहा कि अब तक ट्विटर ने लोगों में या फिर लोगों पर एक मैसिव इंप्रेशन क्रिएट किया है। इट हैज चेंज द वे वी कम्युनिकेट। आने वाले दिनों में ये जो एक्स है वो एक तरह से पूरे के पूरे ग्लोबल टाउन स्क्वायर को और भी ट्रांसफॉर्म करेगा। अभी पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि ट्विटर किस तरह से अपने प्रीमियम ब्लू सब्सक्रिप्शन को पुश करता आ रहा है। कई सारे स्पेशल फीचर्स एक पे वॉल के बिहाइंड वो लेकर आया है। इस ब्रांडिंग ओवरहॉल के साथ इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि शायद अपने प्लेटफॉर्म को और एक तरीके से ट्वीक करे टू प्रमोट यूजर्स टू गेट ऑन द सब्सक्रिप्शन बैंडवैगन। अभी मस्क का जो ट्विटर है पिछले कुछ हफ्तों से तगड़ी कंपटीशन इनफैक्ट फेस कर रहा है मेटा के थ्रेड्स इस प्लेटफॉर्म से, जो इनफैक्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स अब तक अमास कर चुके हैं। अभी वापस चलते हैं, बात करते हैं एक्स के बारे में। अभी मस्क का जो ऑब्सेशन है एक्स के साथ वो जाना माना है, एक्स लेटर के साथ ये जाना माना है। रिपीटेडली कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट नेम्स में उन्होंने एक्स का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल जब ट्विटर को अक्वायर किया था $44 बिलियन में, तो उन्होंने उस कंपनी को मर्ज किया था अपनी एंटिटी एक्स कॉर्प के साथ। अभी कई साल पहले इनफैक्ट 99 में मस्क ने अपना एक वेंचर सेट किया था x.com, जो इनफैक्ट 1999 में लॉन्च हुआ था, एंड ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। मस्क ऑल्सो फाउंडर एंड सीईओ है स्पेस एक्स के, और उनकी गाड़ी टेस्ला के एक मॉडल का नाम है मॉडल एक्स। उनके बेटे का भी निकनेम एक्स है। पर कई यूजर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक्स रीब्रांडिंग के बाद एक ट्वीट जो है उसे क्या कहा जाएगा। तो मस्क ने सिंपली इन यूजर्स को रिप्लाई किया एंड एक्स। बहुत शुक्रिया शिबानी। तो मस्त जो न करे कम है। और हाँ, ये जो नया लोगो है ये डेस्कटॉप ट्विटर पे तो दिखाई भी देने लगा है। आपके फोन्स में, मोबाइल फोन्स में जरूर अभी भी ये चिड़िया दिखाई दे रही होगी, जो कि कुछ देर में शायद फुर हो जाए और ये एक्स उसकी जगह ले ले। चलिए आज का कंज्यूमर अड्डा आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं बता देते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि प्रदूषण के चलते लोग 10 साल पहले बूढ़े हो रहे हैं। क्या है प्रदूषण का बायोलॉजिकल एज कनेक्शन? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। 5:57 पर पॉल्यूशन जवानी का दुश्मन, जरूर देखिए हमारे साथ।